So next we have extradural hematoma, which is a head injury. So an extradural hemorrhage, hematoma, is the collection of blood between the inner surface of the skull. So this is the skull, and जो हमारे पास dura matter है. So this is dura. So then it's obviously extradural because it's outside the dura. So extradural hematoma. और ये हमें पता है कि ये जो 3 layers हैं, this, these are the layers of the meninges. तो इसके दरमियान में जो skull और dura matter के दरमियान में जो जगह है, space है, उसके दरमियान में blood accumulate हो जाता है. तो ये इसकी causes या epidemiology क्या है, always in blue. It's 2% of head injuries. It's more common in males because of risky behaviors. ठीक है, 20 to 40 years, again due to high risky behavior, so like stupid young males, and then high morbidity and mortality if it's not diagnosed and treated properly. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है extra-axial intracranial hemorrhage. ठीक है. So what this means is कि extra-axial means कि it's within the cranium, so it's within the skull essentially, but it's extra-axial, so it's outside, it's not intracerebral. Right? It's not within the brain matter, it's outside the brain matter. So that's just what it means. Causes क्या हैं? Trauma है is the most common cause, जिसमें RTA, assault, falls आ जाते हैं. Now, one thing to remember is कि जो extradural hematoma है, वो कहाँ पे वो है? Terion पे the weakest point ये है, ठीक है, क्योंकि if you see it's where both of 4 of these bones they fuse, so naturally this becomes a weaker point, and इसको कहते हैं terion. ठीक है, and terion is at the temporoparietal region, और इसका fracture जब site होता है तो इसके नीचे middle meningeal artery गुजरी होती है and becomes lacerated due to a fracture, and उसकी वजह से ये bleeding होती है और extradural space में blood इकट्ठा हो जाता है. Less commonly it's due to these sources. Pathophysiology थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं. So trauma, skin fracture, tears the middle meningeal artery, causes rapid accumulation of the blood. It dissects the dura from the skull, which means कि ये जो skull के साथ dura चिपका हुआ होता है ना साथ, इसके दरमियान में bleeding की वजह से एक space बन जाती है जो कि otherwise exist नहीं करती. Actually I should have just done this with red because it's like blood, right? अच्छा, so anyways, जब ये accumulate हो जाता है तो फिर it creates a biconcave shape. So you can imagine कि अगर ये चिपका हुआ है, ठीक है, and यहाँ पे बन रहा है, तो ये biconcave, ये एक थोड़ा सा crescent shaped, या some would even say sort of banana shaped कह रही हूँ. Biconcave is like थोड़ा सा lemon shaped बन सकता है. So sorry, not crescent. This is इसके लिए 2 words यूज किए जाते हैं. यहाँ पे लिख लेती हूँ. So इसके लिए 2 words यूज होते हैं. Biconvex lens because it's convex, we know is convex is like this, right? Because concave is inside, it's caved in. ये biconcave. So bi का मतलब है 1, 2, biconcave, which kind of looks like a lemon as well. So that's extradural. ठीक है. And it can increase the ICP, जिसकी वजह से brain herniation हो सकती है. तो जब ICP raise हो जाएगा and यहाँ पे it begins to push down, तो it can herniate through the lower parts of the brain can herniate, जिससे वजह से respiratory arrest हो सकता है. So then we'll look at clinical features. अच्छा, इसकी जो classic presentation है, you have to remember there are 3 things. ठीक है. Loss of consciousness, because the first thing, let's say कि एक impact हुआ है, the first thing क्या होगा कि बंदा बेहोश हो जाएगा. So loss of consciousness हो गया. The second thing that happens is कि lucid interval होता है कि एकदम से वो बेहोश हुए, लेकिन हो सकता है कि वो उठ जाए थोड़ा सा and वो थोड़ा सा अजीब उसकी हालत हो. Then उसके बाद rapid deterioration हो जाती है. So the third thing is कि deteriorate होगा. तो what happens is कि ये accident हुआ, एकदम से हालत down हो गई, थोड़ी सी बेहतर हुई है, ठीक है, lucid interval है, and दोबारा से वो हो गई. So it's kind of like that emoji जो down graph में नहीं जा रहा होता. तो lucid interval only occurs in 30% of the cases, so don't like, अगर lucid interval नहीं है तो don't say कि this is not that. Rapid deterioration में क्या होता है? Drowsiness हो जाती है, headache, vomiting, focal defects. हमने head trauma में भी ये बात पढ़ी थी कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया होना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक हो जाता है, एंड ड्राउजीनेस हो जाती है. अदर सिम्टम्स में इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, सीजर्स, डायलेटेड प्यूपल्स, ठीक है, या हेडेक. और डायलेटेड प्यूपल इप्सीलेटरल हो सकता है क्योंकि हर्निएशन हो जाती है, अनकल हर्निएशन, विच वी नो इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है.
So signs of raised ICP is, this is really important actually. एक तो Cushing's triad है, ठीक है. Cushing's triad में 3 चीज़ें आती हैं. Bradycardia, hypertension, abnormal breathing. ठीक है, ये 3 चीज़ें. Just remember the heart rate, एक चीज़ कम हो रही है, ठीक है. जो BP है वो कॉम्पनसेट करने के लिए ज़्यादा हो रहा है, एंड एबनॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है. पैपुलर एडीमा ये थोड़ा सा लेट होता है, जिसमें हमारे पास आइज़ का साइन है एंड GCS स्कोरिंग कम हो जाती है. इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी करना चाहेंगे इस पेशेंट में? सो हम करेंगे CBC ऑब्वियसली बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है. यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स, CRP कोएगुलेशन, group and save is basically cross match, but imaging is the main thing that you need to know about because non-contrast head CT is the gold standard, जिसमें मैंने कहा था biconcave या lemon shaped hyperdense lesion नजर आ जाती है. Now why would we do non-contrast? इसकी मेन reason I think it's वो आगे आती है. So I'll tell you when to do contrast and when to not do contrast. But essentially you're going to do non-CT, ठीक है, because we want to, अगर हम वो करेंगे तो बाकी जो vessels हो जाएंगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो eliminate हो जाएंगी. तो जो blood है वो naturally glow करेगा, if you will, like वो white हो जाएगा, वो naturally hypertense है. So that's why non-contrast. So remember, extradural hemorrhage is biconcave or lemon shape. अच्छा, another important thing is it is limited by suture lines, क्योंकि हमने कहा था ना कि ये basically occur कर रहा है स्कल के दरमियान और ड्यूरम मैटर के दरमियान में. तो जहाँ पे सूचर आके यहाँ पे बंद हो जाएगा एंड सील्ड है, ऑब्वियसली वो यहाँ तक ही रहेगा ना. इट कैंट लीव द सूचर लाइन. सो सूचर लाइन से ये लिमिटेड है. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. एंड यू मे सी अ स्कल फ्रैक्चर, ठीक है. डोंट फॉरगेट टू असेस फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, ठीक है. ये मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि CT ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन या एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हाई ट्रॉमा केसेस, ठीक है. रिपीट CT इन डिटेरिएशन. अगर डिटेरिएशन हो रही है या पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट नहीं ठीक हो रहा तो यू हैव टू रिपीट इट.